No, ma'am. So, dear students, today I am taking a revision of acid, bases, and salt chapter. Okay, again, our 7 standard NSO workshop. Okay, 7 standard NSO workshop, and in the 7 standard NSO workshop. Okay, today I am taking a revision of new chapter, that is acid, next one bases, and next one is salts. I am taking revision of acid, bases, and salt. Acid, bases, and next one, that is salts. So, dear students, in our day-to-day life, there are the different tastes. Okay, in chapter number 2, digestion of food. In that, we have seen that on our tongue, on our tongue, taste buds are present, and these taste buds are helping us to identify the taste. So acid, base, salt are the part of variety of things that we handle in our day-to-day life. For example, lemon है, citrus fruit है, having the sour taste. In that acid is present. Then different type of cleaner like toilet cleaner. In that also acid is present. Then we are using soap, shampoo, detergents. They are soapy to touch. In that bases are present. Then by when acid react with base to give salt and water, so salt are formed. Salt के भी type है, acidic salt, basic salt, and neutral salt. So this acid, base, neutral, we can identify with the help of indicator. When there is a color change, then we can easily identify the substance is acidic, basic, or neutral. So first one, we start with the acid. So first one, that is acid. So किसे हमें acid बोलना है? The substance which is having the sour taste. Substance having the sour taste is called acid. The term acid is derived from the Latin word that is acidus, and acidus means sour taste. So many substances in our daily life which we are using, that substance having the sour taste, like vinegar sour taste, tomato sour taste, apple, grapes, tamarind, amla, all those having the acid in them. Now एसिड का क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक एसिड एंड नेक्स्ट वन मिनरल एसिड. नाउ ये जो एसिड है उसका फिर से क्लासिफिकेशन होता है, that is organic acid, and next one is mineral acid. Acid is classified into two, that is organic acid and next one, that is mineral acid. So acid which are obtained from the plants and animal, that acid is called plants and animal source से जो हमें acid मिलता है, that acid is called organic acid, and those acid which is obtained from the minerals, जो acid हमें mineral से मिलता है, that is called mineral acid. So acid present in plants and animal are organic, and जो acid हमें mineral से मिलता है, artificially prepare करते हैं, industry में बनाते हैं, that is called mineral acid. Now this organic acid are weak acid. देखो लेमन जूस है, लेमन जूस स्पिल इन योर हैंड डज नॉट बर्न. सो ऑर्गेनिक एसिड और उसको अनदर नेम क्या है,
that is weak acid. Mineral acid, they are very strong acid. If they burn on your skin, sorry, if they spin on your skin burn. Okay, mineral acid are strong acid, organic acids are weak acid. Organic acid weak होते हैं, mineral acid strong होते हैं. Now some organic acid and their sources. For example, citric acid, it is the example of organic acid और उसको ही हम क्या बोलते हैं, weak acid. So citric acid ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है. हमें कौन से सब्सटेंस में से मिलता है, हमने लेमन खाया, लेमन, ऑरेंज, साइट्रस फ्रूट, इन दैट सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट. लैक्टिक एसिड, मिल्क, कर्ड हैविंग द लैक्टिक एसिड. मैलिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड है. टार्ट्रिक एसिड, टैमेरिन एंड अनराइप मैंगो, उसमें टार्ट्रिक एसिड है. Oxalic acid, tomato, spinach, in that oxalic acid is present. Ascorbic acid, amla, in that ascorbic acid is present. So those are the some common organic acid and their sources. Now what about the mineral acid? They are strong acid, they are made in the factory. And example of mineral acid, first one is hydrochloric acid, second one is sulfuric acid H2SO4, third one is nitric acid HNO3. So sulfuric acid, then hydrochloric acid, nitric acid, then phosphoric acid H3PO4, then next one H3PO4, that is phosphoric acid, then carbonic acid H2CO3, next one H2CO3, carbonic acid, then next one acetic acid CH3COOH. So are the some common mineral acid. Sulfuric acid, उसका फॉर्मूला है H2SO4. हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला है HCl. नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला है HNO3. फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. कार्बोनिक एसिड H3CO3. एसिटिक एसिड CH3COOH. So those are the some example of mineral acid. उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, those are the strong acids. So now next one, concentrated acid and dilute acid. So if the solution of an acid contain large amount of acid and less water. ओके, सपोज कोई एसिड है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड है एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. एसिड ज्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. नेक्स्ट वन इज डाइल्यूट एसिड, इन दैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड मैक्सिमम वाटर. Small amount of acid and maximum water, and that is called dilute acid. Now again acid का classification होता है, that is strong acid, and next one is weak acid. So classification of acid, acid का again two type में classification होता है. So first type, that is strong acid. acid टू टाइप में क्लासिफिकेशन है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर वेरी डेंजरस when spill on our body, burn our body. Strong acid. And next one, that is weak acid. Strong acid and next one is weak acid. So depending on the strength and action of acid, acids are classified as strong acid and weak acid. Sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid are the जो acid है, are the example of strong acid. Sulfuric acid, then
हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है. एंड वीक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आर द वीक एसिड. Most of the mineral acid are strong acid and organic acid are weak acid. So strong acid में first one hydrochloric acid, sulfuric acid H2SO4. This sulfuric acid is called king of acid. Then next one HNO3, that is nitric acid. Now next one weak acid, acetic acid, weak acid है. Then next one carbonic acid, it is the weak acid. Like these are the weak acid. Okay, so oxalic carbonic acid, oxalic acid, acetic acid. Okay, oxalic acid, those are the example of weak acid. In short, weak acid are the acid which is obtained from the plants and animal. उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड. एंड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमें किससे मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं. एंड दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड. ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड, वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड. ओके, जो वीक है दे आर ऑर्गेनिक एसिड, वीक आर ऑर्गेनिक एसिड. So next one, that is properties of acid. Acid sour in taste, acid corrosive in nature. Means suppose आपके ड्रेस पे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड आपके ड्रेस पे स्पील हो गया, ड्रेस क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा. आपकी स्किन पे स्पील हुआ, स्किन भी बर्न हो जाएगी. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड corrosive in nature. Acids are soluble in water. ये जो एसिड्स है वाटर में कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एसिड की टेस्ट कौन सी होती है, सोवर टेस्ट. ओके, एसिड हैविंग sour taste. Second property, acids are corrosive in nature. Third property, acids are soluble in water. Acid water में soluble होते हैं. Now acid react with metal to form salt and hydrogen gas is given out. For example, HCl acid है, acid react with metal, it gives salt and H2 gas is given out. So HCl क्या है, एसिड है, Mg क्या है, मेटल है. सो एसिड रिएक्ट विथ मेटल, इट गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट. ये कॉमन रिएक्शन है, आपको लर्न कर लेना है. एनी एसिड when react with metal, it gives salt and hydrogen gas is given out. Now react with the carbonate to form the salt, water and carbon dioxide. Again acid है, HCl, CaCO3, that is calcium carbonate है. कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन हो गई, हमें साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है. सो कैल्शियम क्लोराइड, साल्ट, then carbon dioxide and water is formed. So acid है. ओके, यहाँ पे मैं 2 लिखती हूँ क्योंकि रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए. ट्वाइस HCl, acid react with the carbonate. Okay, acid react with carbonate to form salt, water and carbon dioxide. ये भी एसिड की रिएक्शन है. कोई भी एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होने के बाद हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन. नाउ वेरी कॉमन रिएक्शन नेक्स्ट वन, दैट इज एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट हो गया, हमें क्या मिलता है, साल्ट एंड वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल HCl, एसिड है, NaOH,
बेस है, दोनों की रिएक्शन हो गई, हमें मिल गया NaCl plus H2O and this type of reaction is called neutralization reaction. When acid react with base to give salt and water, and this type of reaction is called neutralization reaction. Okay, hydrochloric acid base it gives ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमें NaCl सोडियम क्लोराइड मिला एंड वाटर मिला. सो जनरली एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर. एसिड डू नॉट स्टोर्ड इन द मेटल कंटेनर. ओके, हमने कोई भी एसिड परचेस करके लाया, स्पेशली स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो ग्लास बॉटल होती है या तो प्लास्टिक बॉटल होती है. एसिड मेटल में स्टोर करके नहीं लाते हैं बिकॉज दे आर रिएक्ट विद द मेटल. क्लियर? इज इट ओके अप टू दिस? Now, properties of acid. Acids are prepared by dissolving the oxides of non-metal. अगेन ये जो एसिड है, सपोज सल्फर है, ये नॉन मेटल है, कार्बन है, ये नॉन मेटल है. सो इसके ऑक्साइड फॉर्म होते हैं. सो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, it gives non-metal oxide. क्या देते हैं? non-metal oxide देते हैं. and this non-metal oxide when dissolve in water, जब वो वाटर में dissolve होते हैं, then हमें एसिड फॉर्म होता है. dissolve in water it gives the acid. ओके, एसिड कैसे मिलता है आपको लर्न करके रखना है, कीप इन माइंड. ओके, जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो दे आर एसिडिक इन नेचर. ओके, नॉन मेटल के ऑक्साइड है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सभी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के ऑक्साइड कौन से नेचर से होते हैं? उनका नेचर एसिडिक होता है. नाउ सम यूजेस ऑफ एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज यूज इन ऑयल इंडस्ट्री टू डिसॉल्व द ऑयल. देन bearing rock, then purification of salt to make the aqua regia, to remove the scale from the inside of boiler. Sulfuric acid it is used in drug, it is used in plastic, it is used in paint, it is used in chemical, fertilizer, automobile batteries. Nitric acid used in the manufacturing of fertilizer, explosive like TNT, in the extraction and purification of metal. Nitric acid. Then carbonic acid to make the carbonated drink. आप लोग जो थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला पीते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड होता है. टार्ट्रिक एसिड टू मेक द बेकिंग पाउडर एज अ सोवरिंग एजेंट. टार्ट्रिक एसिड बेकिंग पाउडर बनाने में ऐड करते हैं. बेंजोइक एसिड इट इज द फूड प्रिजर्वेटिव. ascorbic acid main source of vitamin C. Citric acid flavoring agent and food preservative. And acetic acid it is the food preservative. So acetic acid food preservative, citric acid food preservative, benzoic acid that one is the food preservative. In our body also acid is present. Deoxyribonucleic acid, DNA, deoxyribonucleic acid, which contain genetic information. Amino acid, प्रोटीन स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोटीन का, अमीनो एसिड में एसिड है. फैटी एसिड स्मॉलेस्ट यूनिट है फैट का. देन इन आवर बॉडी इन द स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन द डाइजेशन एंड किल द बैक्टीरिया. सो इन आवर बॉडी आल्सो एसिड इज प्रेजेंट. DNA, deoxyribonucleic acid, amino acid, fatty acid, hydrochloric acid in our stomach. So this one is about the acid.
Now I'm going to start about the base. Okay, next one is base. So base having the bitter taste. Okay, and base feel soapy on touching. उसको हमने टच किया तो कैसे हमें फीलिंग आती है, सोपी आती है. Base contain OH minus ion, that is hydroxyl ion, and acid contain H plus ion, that is hydrogen ion. एसिड में H प्लस आयन होता है एंड बेस में OH माइनस आयन होता है. सो बेस आर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल. ये जो बेस है मेटल, मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड है, इससे बेसिस फॉर्म होते हैं. ओके, मेटल के ऑक्साइड फॉर एग्जांपल MgO. ओके, देन मेटल के हाइड्रोक्साइड MgOH. ओके, सो मेटल मेटल के ऑक्साइड एंड मेटल के हाइड्रोक्साइड, इन दोनों से क्या बनते हैं, बेस. हाउ बेसिस आर फॉर्म, मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल which are bitter in taste, feel soapy, and also react with acid to form the salt. सो बेसिस कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं. सो इन अवर डे टू डे लाइफ हम सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, ग्लास क्लीनर यूज करते हैं. इन दैट बेसिस आर प्रेजेंट. एंटासिड, soap, lime water, toothpaste, glass cleaner are the few things in that bases are present. जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं उसमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ दैट इज द अल्कली. सो नेक्स्ट वन, अल्कली. सो जो बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं उसको अल्कली बोलते हैं. बेसिस which dissolve in water, bases which dissolve in water. सभी बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, बट जो बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं उसको बोलते हैं अल्कली. फॉर एग्जांपल NaOH है, उसको वाटर में मिक्स कर दिया तो मिक्स हो गए, सो NaOH क्या हो गया, अल्कली. KOH, उसको वाटर में मिक्स किया, मिक्स हो गया, yes, so that one is the alkali. Bases which are soluble in water are called alkali. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide, barium hydroxide are the alkali. Now bases may be two type है, strong base, weak base. Depending on the strength and action, base के two type है, strong base, weak base. Now strong base के एग्जांपल है strong base, and next one is weak base. So strong base, NaOH, sodium hydroxide, strong base है. KOH, potassium hydroxide, strong base है. Now calcium hydroxide, weak base है. Magnesium hydroxide, weak base है. ओके, बेसिस के भी टू टाइप है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड आर द वीक बेस. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. बेसिस bitter in taste, feel soapy on touching, and it also react with the acid to form salt and water, and that is called neutralization reaction. Now preparation of bases. सम मेटल, कोई मेटल है उसको हीट किया, मेटल ऑक्साइड बन गया, उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, हमें हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल बन गया. सो मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम react with cold water
to form the hydroxide. सोडियम है, पोटेशियम है, कोल्ड वाटर के साथ फास्टली रिएक्ट हो जाता है, हमें सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. नाउ बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला है NaOH. क्या यूज है NaOH का? इट इज यूज इन मेक द सोप, detergent, in the manufacturing of paper, rayon, textile, medicine. Then calcium hydroxide, it is used to make the mortar, for to make the mortar. Then for building purpose, calcium hydroxide. White wash, हम हमारे घर को पेंट करते हैं तब जो व्हाइट वॉश देते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ब्लीचिंग पाउडर, देन फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल में बहुत एसिडिटी हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं. सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया. नाउ थर्ड बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज इन इंक और स्टेन रिमूवर. जो इंक रिमूवर है, स्टेन रिमूवर है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है. क्लीनिंग एजेंट इन हाउस होल्ड आर्टिकल, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, डाई बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक बनाने में यूज होता है. देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है AlOH3. इट इज यूज इन द प्रिपेयरिंग द एंटासिड. एंटासिड मीन्स मेडिसिन्स which are used against the acidity. फॉर एग्जाम्पल डाइजीन है, जेलोसिल है, सुक्रोफिल है. एसिडिटी होने के बाद जो मेडिसिन हम लेते हैं, दे आर कॉल्ड एंटासिड. एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज होते हैं. Then next one, magnesium hydroxide MgOH2. It is used to make the antacid. Potassium hydroxide KOH, alkaline battery and make the soap. सोप बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और अल्कलाइन बैटरी के लिए यूज करते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ आयन, कोबाल्ट, क्रोमियम, देन यूज्ड फॉर मेकिंग द कलर्ड ग्लास. आयन ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड है, जो कलर ग्लास बनाते हैं उसके लिए यूज होते हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज यूज फॉर मेकिंग द रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स. ब्रिक्स बनाने में मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स यूज होते हैं. सो दीज आर द सम यूजेस of bases in our day to day life. बेस, जो बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं उसको हम अल्कली बोलते हैं. बेस में OH माइनस आयन होता है. इफ इट गिव्स मोर OH माइनस आयन, दे आर स्ट्रॉन्ग बेस. इफ व्हेन वी dissolve base in water and it gives less OH minus ion, then they are weak base. Ammonium hydroxide is the only base which does not have any metal atom. Instead it has the ammonium. Now ये जो base है, metal से base form होते हैं. ओके, कीप इन माइंड, बेस किससे फॉर्म होते हैं? मेटल से. एंड एसिड किससे फॉर्म होते हैं? नॉन मेटल से. ओके, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेप्शन है. बेस है बट मेटल से फॉर्म नहीं हुआ है. किससे फॉर्म हुआ है? अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन से फॉर्म हुआ है. सो दीज आर अबाउट द बेसिस. Right now I have tell you the uses of sodium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide, aluminium hydroxide, magnesium hydroxide, potassium hydroxide, oxides of iron, cobalt, chromium, oxides of magnesium oxide, aluminium oxide, calcium oxide. ओके, सबके यूजेस मैंने आपको बताए. नाउ कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, how we can identify? Every time we are not testing the chemicals. Okay, ये जो chemicals है, acid base,
एवरी टाइम हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, चलो सोवर है तो एसिड है, बट इन द साइंस लेबोरेटरी देयर आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर प्रेजेंट, that's why we are not touching, and if we try to touch our finger burn. So कैसे आइडेंटिफाई करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग द इंडिकेटर्स। हम क्या यूज करते हैं, दैट इज द indicators, and indicators are the substance which are used to find out that the given substance is acid, given substance क्या है, acidic है, basic है और न्यूट्रल है, उसके लिए हम indicators यूज करते हैं। so it is telling us that the substance और liquid acidic है, basic है कि न्यूट्रल है। So, indicators are the weak acid or weak base which change the color in presence of acid or base. If there is no change in color of the indicator, substance are called neutral substance. यदि हमने इंडिकेटर ऐड किया एंड कलर ही चेंज नहीं हुआ, देन दैट सब्सटेंस आर द न्यूट्रल सब्सटेंस। नाउ इंडिकेटर में टू टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, और दे आर आल्सो कॉल्ड artificial indicator. Natural indicator means those indicator which is obtained from the natural things, they are called natural indicator. For example, litmus है, टर्मेरिक है, चाइना रोज है, रेड कैबेज का जूस है, एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं, those are the natural indicator. So natural substance से हमें मिलते हैं plants like this, ओके, नेचुरल सब्सटेंस से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। सो लिटमस हमें मिलता है लीचेन प्लांट से, एंड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। टर्मेरिक form the yellow color solution in water. China rose is obtained from soaking the China rose petal in water. Red cabbage, it is the purple color indicator obtained by boiling the red cabbage. रेड कैबेज को बॉईल करके एक्सट्रैक्ट करके उसका जूस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेड कैबेज। सो 4 एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस पेपर, टर्मेरिक, चाइना रोज एंड रेड कैबेज। सो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड में रेड होता है। एसिड कैसे ध्यान में रखना है, एसिड बुरा होता है, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है। देन बेस में ब्लू लिटमस पेपर नो चेंज, न्यूट्रल में नो चेंज। देन रेड लिटमस पेपर है, एसिड में नो चेंज, मीन्स रेड का रेड ही रहता है, बट रेड का ब्लू होता है बेस में, एंड न्यूट्रल में नो चेंज, मीन्स रेड का रेड ही रहता है। टर्मेरिक सॉल्यूशन, उसका ओरिजिनल कलर कौन सा होता है, येलो, एसिड में नो कलर चेंज, मीन्स येलो का येलो ही रहता है। बट यही टर्मेरिक सॉल्यूशन हमने कोई भी बेस में ऐड कर दिया, वो कैसे हो जाता है, रेड, एंड न्यूट्रल में नो चेंज। चाइना रोज, उसका ओरिजिनल कलर कैसे है, पिंक, हमने एसिड में ऐड कर दिया, उसका कलर चेंज होता है मैजेंटा। वही चाइना रोज जो पिंक कलर है, हमने बेस में ऐड कर दिया, ग्रीन हो जाता है। एंड व्हाट अबाउट द न्यूट्रल, नो कलर चेंज। देन रेड कैबेज जूस, उसका ओरिजिनल कलर है पर्पल, हमने एसिड में ऐड कर दिया, रेड हो जाता है। हमने बेस में ऐड किया, ये जो रेड कैबेज पर्पल का इंडिकेटर है, हमने बेस में ऐड किया, ग्रीन होता है, एंड न्यूट्रल सब्सटेंस में ऐड किया, देन नो चेंज। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट टाइप है दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि फैक्ट्री में बनाते हैं,
आर्टिफिशियल है, मैनमेड है, सिंथेटिक है. सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर prepared artificially, they are called synthetic indicator. For example, phenolphthalein, methyl orange are the synthetic indicator. phenolphthalein उसका ओरिजिनल कलर कैसा है? कलरलेस. आपने फेनोफ्थेलिन एसिड में ऐड किया, नो कलर चेंज. न्यूट्रल में ऐड किया, नो कलर चेंज. बट सेम फेनोफ्थेलिन आपने बेस में ऐड किया, उसका कलर चेंज होता है पिंक. मिथिल ऑरेंज, उसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, आपने एसिड में ऐड किया, रेड हो जाता है. बेस में ऐड किया, येलो होता है. एंड न्यूट्रल में ऐड किया, देन देयर इज नो कलर change. So those are the indicators. Okay, two type के indicator. Now next one, that is neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन से? फॉर एग्जांपल HCl, when acid react with the base NaOH क्या है? बेस. it gives NaCl plus H2O. so कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है, देन हमें साल्ट एंड वाटर मिलता है, and that reaction is called neutralization reaction. Acid react with base to give salt and water, and that is called neutralization reaction. And whenever there is a neutralization reaction, heat is evolved, heat is given out. Yesterday I have taught you about the type of reaction or how we can identify the reaction. कोई reaction में heat is given out or heat is absorbed. Okay, heat is given out, that is exothermic, and heat is taken in, that is endothermic. So neutralization reaction में heat is evolved, heat is given out, and salt and water is formed. Now this neutralization reaction are useful in our day-to-day life. Yes. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर, मेरी सॉइल है टू मच एसिडिक हो गई है, मैंने ऊपर से बेस ऐड कर दिया, एसिड बेस की रिएक्शन होने के बाद मेरी सॉइल कैसे हो जाएगी? न्यूट्रल. तो सॉइल एसिडिक है तो उसमें क्या ऐड करते हैं? साल्क लाइम, दैट इज बेस. ओके, साल्कलाइन बेस है, सॉइल ऑलरेडी एसिडिक हो गई, इन दोनों की रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, देन सॉइल न्यूट्रल हो जाती है. सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मुझे बहुत एसिडिटी हो गई है, ओके, टू मच एसिडिटी हो गई, आई एम टेकिंग द मेडिसिन एंटा एसिड, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है. सो दैट वन इज द एंटा एसिड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों बेस है, मेरे स्टमक में ऑलरेडी मोर एसिड हो गए, एसिड बेस की रिएक्शन हो जाती है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी. देन हमें एंट बाइट हुई है, एंट बाइट उसके बॉडी से, एंड क्या करते हैं? हमें बाइट करते हैं तब उसके बॉडी में से फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, एंड उसके ऊपर हम बेकिंग सोडा लगाते हैं. एसिड के ऊपर से आपने बेकिंग सोडा लगा दिया, क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, सो लाइक दिस. देन वेस्ट स्टीम जो कि बेसिक है, उसके ऊपर हम विनेगर लगाते हैं, अगेन बेसिक एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देन टू प्रिवेंट द टूथ डिके, हमारे टूथ के ऊपर बिकॉज ऑफ सम फूड आर पार्टिकल आर प्रेजेंट, दैट फूड आर फर्मेंट, सपोज एसिड फॉर्म हो गया हमारे माउथ में, देन वी आर यूजिंग द टूथपेस्ट. टूथपेस्ट में बेस है, एसिड बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फैक्ट्री में से जो वेस्ट बाहर निकलता है उसमें यदि मोर एसिड है तो ऊपर से बेस ऐड करते हैं, सो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाती है. कॉपर के यूटेंसिल है, कॉपर के यूटेंसिल के ऊपर जो लेयर फॉर्म हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट,
ओके, सबके घर में भगवान के पास कॉपर के यूटेंसिल होते हैं, उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट का लेयर फॉर्म होता है जो कि बेस है। देन आपकी ग्रैंड मदर क्या करती है, लेमन जूस अप्लाई करती है, नहीं तो टैमेरिंड अप्लाई करती है। सो अगेन बेस प्लस एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Okay, so those are the common application of neutralization in agriculture, in digestion, remedy for ant, bee and wasp sting, tooth decay, treatment of wastewater, then regaining the shine of tarnished copper article. Now acid है, react with base to give salt and water, that is called neutralization reaction. Now salt के कुछ type होते हैं, that is type of salt. Okay, last point of this chapter, that is salt. Salt का classification फिर से 3 इसमें होता है, that is normal salt, acidic salt and basic salt. So salts, salt के 3 टाइप है. फर्स्ट वन that is normal salt, second one is acidic salt, and then next one is basic salt. How many type of salt? Salt के 3 type है, that is normal salt, acidic salt and next one is basic salt. Salt which are formed by the neutralization of acid and base and do not contain any replaceable hydrogen and oxygen are called normal salt. Sodium chloride, magnesium sulfate are the example of normal salt. Acidic salt, the salt is formed by incomplete neutralization of acid by the base contain replaceable hydrogen atom. इसमें replaceable hydrogen atom होता है, they are called acidic salt. For example, sodium hydrogen sulfate, calcium hydrogen sulfate. Next one is basic salt. Salt is formed by incomplete neutralization of base by the acid contain replaceable OH minus ion, कि जिसमें OH minus ion replace होते हैं. For example, copper hydroxyl chloride, magnesium hydroxyl chloride, basic salt. Now nature of the salt: acidic salt, formation by strong acid and weak base. Basic salt, formation by strong base and weak acid. They are basic in nature. And those salt which is formed by the neutralization of strong acid and strong base, they are neutral in nature. So how salt is formed? By the process of neutralization reaction, reaction between salt and water, reaction between dilute acid on metal hydroxide, metal carbonate, metal oxide. Properties of salt: generally salt having high melting point, boiling point, good conductor of electricity. Some salt are soluble in water and some salt are not soluble in water. Now some common salt and their uses. For example, NaCl. It is a common salt which we add in our food item. It is used in a washing soda, baking soda, caustic soda, that is sodium chloride. Sodium carbonate washing soda है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के लिए यूज होता है. सोडियम बेंजोएट साल्ट है, फूड प्रिजर्वेटिव यूज होता है. कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज होता है. Calcium sulfate, plaster of Paris, setting broken bone, and in cement industry, bleaching powder as a disinfectant. So those are the salt and their uses. Now next one, that is pH scale. So इंडिकेटर हमें क्या बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, बट हाउ मच एसिड, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, फॉर दैट वी आर यूजिंग द इंडिकेटर पीएच पेपर. ओके, इंडिकेटर ने हमें क्या बताया, सिर्फ एसिडिक है कि बेसिक है.
बट हाउ मच एसिडिक और हाउ मच बेसिक, उसके लिए हम पीएच पेपर यूज करते हैं एंड दिस पीएच पेपर टेल अस द strength of acid or base. Here pH, P means potence, means power of hydrogen. pH means power of hydrogen, and in this pH paper there are 1 to 14 numbers are present. pH 1, 2, 3 are strong acid, 4, 5, 6 are weak एसिड। पीएच 7 है तो वो सबस्टेंस न्यूट्रल होता है। पीएच 8 टू 11 दे आर वीक बेस। पीएच 12, 13, 14 दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। जो सब्सटेंस का पीएच 12, 13, 14 है दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। 8, 9, 10, 11 वीक बेस। पीएच 7 है दैट इज न्यूट्रल। पीएच 1, 2, 3 है that is strong acid. pH 4, 5, 6 that is the weak acid. So Excuse me, pH ma'am. paper, yes Ma'am, it is not of 6th standard, no? Shaurya, is it okay? Yes, ma'am. Shaurya Mari, is it okay? So Yes, ma'am. here I have completed your chapter number 7, that is acid base salt. Arnav, Anushka, is it okay? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ishan Chinsole, is it okay? Ishan Chinsole? Okay. So read this chapter very carefully. Okay. Okay, Shaurya, ma'am. Arnav, Anushka, Yes, ma'am. understand about the acid base and salt? Yes, ma'am. Yes. Okay. Chalo, bye bye. Bye, ma'am.